जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। Jai Hind Defense Aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Trishul Defense Academy. अभी FCAT को सिर्फ 12 days बचे हैं and in last 12 days में I hope you guys are practicing as much as previous year papers as well as practice papers with set timer, and also you are revising the content we are studying daily. So let's, without wasting any further time, let's move on to today's topic. Today we will be studying polity, and the first topic of polity is the most important is Constitution. So we will be studying about the Constitution of India, the background, Constituent Assembly, parts, schedules, and articles. But before that, we'll discuss yesterday's answer. So yesterday I asked a question that one of the important trains runs from Howrah to Kathgodam. It is the Bagh Express, and why it is named after the Jim Corbett Park. In order to honor that, it is known as Bagh Express. Now, Narmada, it originates from Amarkantak Plateau in Maikal Hills. We read about Maikal Hills in the mountains section, that it is situated east to the Satpura and Mahadev Hills. So it is Amarkantak, it is the highest point of Maikal Hills, and from there Narmada originates. And Mahanadi, it forms delta in Orissa. So this river, it originates from Chota Nagpur Plateau. Now, the next question was, what is the private sanctuary, wildlife sanctuary in India? So, Sai Sanctuary, Save Animals Initiative. Please note it down. Sai Sanctuary. It is in Coorg, Karnataka, Kodagu district, or famously known as Coorg. Sai Sanctuary in Coorg. It is the only private sanctuary in India. So now we will study about the constitutional background. So, Constitution of India. The demand for the Constitution, the first demand, it was put forward by M.N. Roy in 1934. Guys, each and every point of this topic is important, and repeatedly it has been asked in FCAT examination. There are many questions from these lines. So please make your short notes, especially in this topic. Now, in 1935, Indian National Congress is officially demanded Constituent Assembly to frame Constitution, because framing Constitution meant we as Indians, we would have our own rules and regulations, our laws that will be suitable to us, and it will be formed by Indians only. So August offer, it came in 1940, and now I have a question for you guys. Who is associated with August offer? Tell me in the comment section. So August offer, it came in 1940, and it was accepted this demand, but it was rejected by INC. Why? Because Indian National Congress, it was demanding that only Indians will be allowed to frame their constitution. It's the constitution for Indian people, so only we will be allowing. That is why it was rejected by INC. Then cabinet mission plan. After that, Cripps mission was also sent in 1942, and then cabinet mission plan in 1946. It was one formal step towards setting up the Constituent Assembly. It was now decided that India will be an independent country. We read about cabinet mission in the Indian freedom struggle topic also. I will suggest you guys to go back and revise that video as well. So, setting up of Constituent Assembly and transfer of power. So it was cabinet mission plan in 1946. Now, when did the first meeting of Constituent Assembly take place? So Constituent Assembly, it was formed of around 390 members, and the first meeting took place on 9th December 1946. And who was the first president? Dr. Sachidanand Sinha. On the basis of seniority, he was acted as interim president. And the major committees of the Constituent Assemblies were drafting committee, responsible for writing or drafting the constitution. It was headed by Dr. B.R. Ambedkar, who is also known as the father of Indian Constitution. Now, advisory committee on fundamental rights, it was headed by Sardar Patel. State committee, it was headed by Pandit Jawaharlal Nehru. Union Constitution and Power Committee, it was headed by Pandit Jawaharlal Nehru.
There were many other important committees as well, but the important ones were these. Now, drafting committee. Among all committees, this was the most important. Why? Because it was related with drafting the constitution. So it was this committee entrusted for preparation of draft constitution, and it consisted Dr. B.R. Ambedkar, who was the chairman, N. Gopal Swamy Iyengar, A.K. Iyer, Dr. K.M. Munshi, and three others. Now, the committee, after the first meeting when it was held in 1946, and the committee proposed its first draft in February 1948. Like from the first meeting of Constituent Assembly to the first meeting of drafting committee on 29th August 1947, the first draft of constitution was ready in February 1948. But after extensive reading, continuous sessions, and the draft constitution was passed on when 26th November 1949. This is an important date, 26th November 1949. Now we will talk about the sources of the constitution. So it was claimed by the scholars that the Constitution of India, it was copied from 1935 Government of India Act, but it was not so. Now 1935 Government of India Act, we have read about this in Indian Freedom Struggle video. I would suggest you guys to watch that video again and answer the question in comment section that what was one specific feature of 1935 Government of India Act. It abolished something. What was that? But because the Constitution of India, it was for a very diverse population. Indian population consisted people from all various cultural backgrounds, various regions, and people from all educational classes, as well as from all the walks of life. India was a very diverse country, so a constitution that needed to be framed was to be something that catered to the needs of every citizen of the country. That is why the constitution makers, they researched the constitutions across the world, and then several provisions were borrowed. So it borrowed several provisions from constitution of other nations. Now there इस पे FCAT में usually questions रहते हैं कि कौन सा फीचर कहाँ से बोरो किया गया है, तो इसको प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और एक बार उसको मतलब नोट्स बना लीजिएगा. सो फंडामेंटल राइट्स इसको बोरो किया था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से. सो फ्रॉम वेयर द फंडामेंटल राइट्स वर बोरोड? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, और यहीं से बाई कैमरल लेजिस्लेटिव सिस्टम जो होता है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स वाज इन ब्रिटेन. सो ये भी यहीं से बोरो किया गया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. इमरजेंसी प्रोविजंस फ्रॉम वेइमर कॉन्स्टिट्यूशन जो कि जर्मनी का था. Procedure established by law, Japanese Constitution. DPSP, Directive Principles of State Policy, ये कहाँ से थे? Irish Constitution से. Amendments जो थे साउथ अफ्रीका से थे. Article 32 of our Constitution, it deals with amendment and it is known as heart and soul of the Constitution. इसको हम अभी पढ़ेंगे. And preamble and fundamental duties along with 5-year plans, ये कहाँ से बोरो किया गया था? USSR से. Now, features that were borrowed from 1935 Government of India Act. What were those? Federal scheme, federal form of government, that is executive as well as the and central government रहेगी एक, और executive और ministers दोनों ही रहेंगे. ये यहाँ से borrow किया था. Office of Governor, Judiciary, Public Service Commissions, ये हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा था. 1919 का जो Government of India Act था, that established the ground for the setting up of Public Service Commission in India. And administrative details. Now the motion of final draft of Indian Constitution, जो final हमारा Constitution बन के ready कब हो गया था? ये हो गया था 26 नवंबर 1949 को. बट ये adopt और implement कब हुआ था? ये implement हुआ था, adopt in effect कब आया था? adopt तो ये 9 दिसंबर को कर लिया गया था. इफेक्ट में आया था ये 26 जनवरी 1950 को. और 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वीडियो में कि जो लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस था 1929 वाला, उसमें डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी को हम एज एन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे 26 जनवरी 1930 से हर साल. बट हमें इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को मिली, तो हम 15 अगस्त 1947 से ही 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने लग गए. सो ये जो डेट थी ये इम्पोर्टेंट थी, और इसी डेट के इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमने
कॉन्स्टिट्यूशन को इस दिन इफेक्ट में लाया और हम अपना रिपब्लिक डे 26 जैन को सेलिब्रेट करने लगे. Now it took 2 years, 11 months and 18 days for assembly to complete the constitution drafting. अब इसमें कितने आर्टिकल्स थे ओरिजिनली? 395 आर्टिकल्स, जिसमें 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे. एंड इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया ऑफ द वर्ल्ड. कैलीग्राफी किसने की थी? ये क्वेश्चन आ जाता है. इंग्लिश कैलीग्राफी की थी इन्होंने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस कि कॉन्स्टिट्यूशन की हिंदी कैलीग्राफी किसने करी थी? एज वेल एज इसमें जो डिजाइनिंग थी, कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैंड रिटन, तो इसके पेजेस पे जो डिजाइनिंग थी वो कौन से इंस्टीट्यूट ने करी थी? नाउ जो बॉर्डरिंग होती है वो कौन से इंस्टीट्यूट ने करी थी? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. Meanwhile, the assembly were assigned two separate functions after partition, one to draft a constitution and other to enact ordinary laws for the countries. तो बाद में असेंबली को दो सेपरेट फंक्शंस हो गए थे. एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना था और ऑर्डिनरी लॉज को इनेक्ट करने का भी काम. Now the constituent body, it was chaired by Dr. Rajendra Prasad and the legislative body was chaired by G.V. Mavlankar. Underline this part, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है. सो नाउ विल नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एज वी नो 22 पार्ट्स थे. तो इसमें पार्ट्स, आर्टिकल्स जो है 395 ओरिजिनली थे, तो ये 22 पार्ट्स में थे. तो आर्टिकल 1:4 में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यहीं पे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, ये सब था. 5 to 11 डील विद सिटीजनशिप. 12 to 35 पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स. ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से बिलोंग करते हैं, या फिर डीपीएसपी कौन से. तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 से, डीपीएसपी हमारे पार्ट 4 से. 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. 5th में द यूनियन गवर्नमेंट है, इसमें ही प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो इसमें 5th में है. 6th में द स्टेट गवर्नमेंट्स हैं. 7th deals with states in Part B of the first schedule repealed in 1956 by 7th Amendment. 8th में यूनियन टेरिटरीज हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट वंस आई एम हाईलाइटिंग. द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, पंचायत. इंडिया में कौन से वाइसरॉय को द लॉर्ड ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स कहा जाता है? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. म्यूनिसिपैलिटीज 9A, मतलब 9th में ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स है. 10th शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, तो पार्ट 10 ये भी इंपॉर्टेंट है. रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट पार्ट 11 में. फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स पार्ट 12 में. 13th में ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकॉर्स बिटवीन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. 14th पार्ट ये किससे डील करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स. 15th डील करता है इलेक्शन से. 16th हैज स्पेशल प्रोविजंस, रिजर्वेशंस ऑफ SC ST एंग्लो इंडियन. तो अगर आता है कि रिजर्वेशन कौन से पार्ट में, दैट इज इन पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल्स कौन से हैं? 330 से 342. ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 में है. इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल्स 352 से 360 में है. मिसलेनियस प्रोविजंस लाइक इम्यूनिटी ऑफ प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर, ये पार्ट 19 में. पार्ट इमरजेंसी वाला ये इंपॉर्टेंट है. पार्ट 20 का है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं अब तक? आई लाइक यू गाइस टू आंसर द क्वेश्चन. देन टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस इज इन पार्ट 21 एंड पार्ट 22 में टाइटल्स, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड अथॉरिटेटिव्स. Now we'll know about the schedules. Schedule 1 में क्या है? State and Union Territories name and their boundary details. Schedule 2 has special powers and salary details of President, Governors of State, Speakers and Deputy Speakers of Rajya Sabha and Lok Sabha, Supreme Court and High Court judges. Schedule 3 has oath and promises of all authority except President and Vice President. Schedule 4 में राज्य सभा, MP, count of state and union territories हैं. Schedule 5 has scheduled area and scheduled tribes. ये important है 5th schedule, as well as 6th schedule. 6th schedule क्यों important है? States of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram tribal areas administration and control law details. यहाँ पे concept आ जाता है ILP का, inner line permit. बहुत सारे areas हैं इन states में जिनमें जाने के लिए आप as an Indian भी आपको जरूरत पड़ती है. ILP बोलते हैं, inner line permit, because of
द ट्राइबल्स, इंडिजिनस ट्राइबल्स जो वहाँ पे रहती हैं, या फिर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कल्चर एंड डाइवर्सिटी, एज वेल एज कई बार वो डेंजरस एरियाज हैं बिकॉज ऑफ नक्सलिज्म और इंसर्जेंसी। तो ये शेड्यूल 6 में आता है, और इन्हीं स्टेट से यूजुअली आसपास जो है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट भी लगा रहता है। तो ये 6th शेड्यूल और 5th ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 7th क्या है? डिटेल्ड लिस्ट अबाउट यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, पावर एंड कॉन्करेंट लिस्ट। 8th शेड्यूल हैज ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये फिर से इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन से शेड्यूल में है? 9th is validation of certain acts and regulation. 10th schedule has details about party changes and disqualification of MP MLA, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रह रहे हैं और अगर हमने जो लीडर अपना चूज किया है वो सर्टेन मार्कर्स को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे है, ये 10th शेड्यूल में है। नाउ शेड्यूल 11th इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ पंचायत, एंड 12th शेड्यूल इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी, यानी कि 11th एंड 12th शेड्यूल अपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से डील करते हैं। नाउ द मस्ट नो आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स हैं। इंडिया में कितनी फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। हम उसको फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का एक अलग से ही सेक्शन कवर करेंगे। 36 से 50 स्पेसिफाई द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 51A specifies the fundamental duties of every citizen. 80 Article 80 specifies the number of seats for Rajya Sabha. 81 specifies the number of seats for Lok Sabha. Article 343 Hindi as official language. 356 imposition of president rule. 370 जिसको अभी रिपील किया गया था, स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर है। एंड 395 रिपील्स इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट एंड गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसने रिपील करके इंडिया को एक सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर कंट्री डिक्लेयर किया गया था। नाउ प्रीएम्बल, ये भी एक काइंड ऑफ इट इज एन शॉर्ट सिनॉप्सिस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बताता है व्हाट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स फॉर। सो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। तो प्रीएम्बल में पहले इनिशियली सोशलिस्ट और सेकुलर टर्म्स नहीं थे। ये 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, फिर ये ऐड हुआ था। और केशवानंद भारती केस था, उस टाइम पे ये स्पेसिफाई किया गया था कि जो प्रीएम्बल ऑफ इंडिया है वो भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो प्रीएम्बल, लेट्स रीड द प्रीएम्बल। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रीएम्बल है ये इट इज प्राइमरली बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। तो वी, ये बताता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम ये इंडियन के लोगों के द्वारा डिसाइड किया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन। हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, अब इसके फीचर्स बताता है इंडिया का कैसा टाइप का कंट्री है। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड क्या करता है, पहले किसने दिया, कैसे टाइप का कंट्री है, और फिर हमें क्या राइट्स हैं। जस्टिस, कैसा जस्टिस? सोशल, सोशल जस्टिस, हर कोई मतलब इक्वल राइट्स हैं, ऊपर नीचे नहीं है, सब बराबर हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, सेकुलर कंट्री है, थॉट, expression and belief. Equality of status and of opportunity and to promote among them all. And fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integration of the nation. अब ये कब हुआ? In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, इस दिन ये Constitution का final draft ready था। Do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। सो वी, इंडिया वैसे भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है एंड डेमोक्रेटिक कंट्री है, एंड डेमोक्रेटिक कंट्री का तो फॉर्म, डेमोक्रेसी का तो फॉर्म ही होता है, इट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सो ऐसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ये खुद इंडिया के लोगों ने लिखा है। कैसा कंट्री है? सोवरेन, ये कंट्री का फीचर बताता है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक,
अब हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के, तो जस्टिस, कैसे कैसे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all, and fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. अब ये फिर से आई एम टेलिंग दिस, ये कब रेडी हुआ था फाइनल ड्राफ्ट? 26 नवंबर 1949. Do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. So guys, this was it for the constitutional background. We will be learning more about fundamental rights and duties as well as DPSP's powers of the government. And if you want me to cover some more topics, please let me know in the comment section. And the questions of the day is, when was national anthem adopted? So national anthem of India, it was written by Rabindranath Tagore. So when was it adopted? Who calligraphed? I have asked this question already. The constitution in Hindi. And what was the seal of Constituent Assembly? What was the symbol of Constituent Assembly? Along with that, I also have a question that which viceroy is associated with local self-governments, as well as who gave the August offer in the INC, which was rejected by Indian National Congress. With this, I will conclude today's session. I hope you guys are studying and practicing regularly. Please keep practicing, keep revising, and make your own short notes. I'm stressing this thing, making your own short notes time and again, because आपके खुद के short notes आप खुद जो लिखे होते हैं वो आपको ज़्यादा समझ में आता है. Please make your own short notes, keep revising regularly, and keep practicing various practice papers so that you are able to score 200 plus and make your dream come true of becoming a Air Force officer. Till then, keep practicing, keep working hard. Please like and share this video, comment the answers in the comment section, and subscribe to the YouTube channel of Trishul Defense Academy. तब तक के लिए जय हिंद. जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार. अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी.